Today's daily Leetcode problem. This is sum of distance in a tree. Basically, what you need to tell, you have been given a tree basically in form of kind of graph. Basically, there are n nodes and n minus 1 edges, and edges vector is being given to you. Now, you need to return the answer of length n. So, basically, answer array of length n, where answer of I is the sum of the distance between the ith node and all other nodes. For example, answer of 0 means sum of the zeroth node to all other node, basically distance of 0 to all other node. So you can say for 0 to 1 distance is like just 1, 0 to 2 distance is like also 1, as you can see in this graph it's just at 1 distance. 0 to 3 and 4 and 5 distance are basically, let's say 2. So basically 3 distance are of 2, so 2 into 3 is equal to 6, and 2 distance are of 1, so plus 2 would be something like 8. So total, the sum of the distance between 0 and all other nodes is 8. And that's about it. Like, then you can also calculate for 1, because for 1, the 0 is at, distance 1, and 2 is at distance 2, and 3, 4, 5 are at distance, 3. So there are three numbers which are at distance 3, so 9 because of this, then plus 2 because of this 2, and plus 1 because of this 0. So total distance is equal to 12. Like you can say the sum of all the distances from one to every other node. Now, how you have to do it? What is the basic logic behind the problem? First of all, we will calculate what is the value for 0. We will calculate the answer for 0, basically what is the total sum of the distance of every node from 0. Then we will use this result to calculate all the other things like 1, 2, because we cannot do this for every, every element, because that will take n square time complexity, I think, or maybe more than that, because you have to go for each node and then you have to traverse the whole tree and do that. So let's see how we are going to do that. So essentially, let's create a graph of vector of int, and this is graph, and let's say uh, for auto in g edges, basically all edges, what you will do, g of I of 0 dot push back. Okay, so basically this is 0 indexing, so no need to do minus 1, something like that. And also something like same, g of I of 1 dot push back I of 0. So this is me creating the graph, and like the size of graph would be n. And after that you will do a dfs function, or let's say d1 function, because any name you can give to function. I'll pass 0 to this, and this d1 goes to 0 will tell me the answer for 0. Okay, how it will tell me the answer for 0? Basically, how we can calculate the answer for 0? We need two things. One, we need the depth of every node. Okay, depth of node, comma, we need a subtree of every number of nodes in a subtree of a particular node. And subtree also consists of this node also. For example, number of nodes in the subtree of 0, what will be? So sub of 0 would be something like how many nodes are under the 0? 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right, including 0, I'm saying. Okay, so as you can see, there are total 6 node, and that's why the answer, sub for 1 would be just 1, because 1 is under the 1. And sub 3 for 2 would be something like 4, and as you can guess, like 3 for 5 it's 1, like for leaf node it's just 1. So this is the subtree function, subtree basically a vector. And what is the depth vector? So depth for 0 you can say like 0 maybe, and depth for 1 would be, you can say like 1, and depth for 1 and 2, depth is 1. So this is basically, you can say level or depth, you can say anything, like you can also say it is level kind of thing. So that's what we are gonna use to calculate this value 8. How? Because we'll see how many nodes are at depth 1. So depth 1 pe we have, yeah, level 1 pe, because level 0 is, not needed for this. And level 1 pe we have two nodes, so 2 into 1. So basically number of nodes at level 1, number of nodes at level 1 into 2. No, into 1, because that is the basically difference between 0 and this. And so on, number of nodes at level 2. So answer will be get multiplied by 2, because the difference between the 0 and level 2 is 2 distance. Yeah, so that's about it. Let's create a d uh, void, or you can also make it like int d of int starting vertex and int parent. Basically, I'm not using visited, I'm using parent kind of thing. So for before that, let's say
int s is equal to, let's say, 1, initialize it by 1, auto I in graph of sv, all the children's जो भी इसके हैं, we will go to them and we will say calculate the answer for yourself. तो we'll say कि s plus is equal to something like this. S is basically the number of nodes in a subtree. So initially why 1, because I'm considering this sv as a one node, and then I'll be calling on कि भाई अपनी node लेके आओ कि number of nodes you have, like d1 of I पे I'll call, and okay, its function name is d1 I, and parent where I will pass something like p. And this also, or we only have to do if I is not equal to parent पे हमें ये नहीं करना, because starting vertex का भी कुछ parent होगा obviously, generally zero का कोई parent नहीं है, वन का पेरेंट जीरो है जो हम पास करेंगे, लाइक एज अ नॉट पेरेंट बट एस वी, एंड देन या इफ इट्स नॉट, सो बेसिकली हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है, जीरो को इंक्लूड नहीं करना है, बिकॉज एज तो वहां पे भी है, टू थ्री पे भी एज कर रहा है, टू जीरो पे भी एज कर रहा है, बट टू और थ्री को हम सब ट्री में इंक्लूड करेंगे, जीरो को हम टू के सब ट्री में इंक्लूड नहीं कर सकते. सो दैट्स फॉर दिस. इसको विजिटेड के थ्रू भी करते हैं हम कई बार, बट यहाँ पे ओनली पेरेंट के थ्रू कर सकते हैं, बिकॉज साइकिल वाइकल नहीं है और सिंपल ग्राफ है काफी. And now you can write subtree or of sv is equal to s, you can say something like that, and then you can return also s for other nodes basically जो इसको कॉल कर रही है. और अदरवाइज व्हाट यू कैन डू कि यहाँ पे ऐसे ना लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सीधा sub of s, सब ऑफ एच वी प्लस इज इक्वल टू दैट, और सब ऑफ एच वी ही तुम रिटर्न कर दो, तो एच का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है. और सब ऑफ एच वी को हम इनिशियलाइज कर सकते हैं वन से, ठीक है, ऐसे कुछ, राइट. That's also fine. Now sub tree वाली यहाँ पे मैं वेक्टर ऊपर ही बना देता हूँ, because it's a global kind of vector. I'm not, you know, you can make it global or can make it local as well, but global कर लेते हैं, ठीक है. डॉट resize आपका होगा n से resize कर देंगे. अब आंसर फॉर जीरो ऑलमोस्ट आ चुका है, लेट्स सी हाउ कैसे आएगा आंसर फॉर जीरो. तो मैं बोलूँगा अभी डेप्थ मैंने इनिशियलाइज नहीं करा ना, डेप्थ या फिर लेवल वेक्टर भी बना देता हूँ मैं, लेवल डॉट resize n, और लेवल वेक्टर हम बना भी लेते हैं फटाफट से, एल वी एल, और सबका लेवल भी हम यहाँ पे लिखते जाएंगे काइंड ऑफ. कैसे करते हैं इसे, लेवल को हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेवल ऑफ इज इक्वल टू वन प्लस लेवल ऑफ एस वी, की जो भी लेवल ऑफ एस वी था उसको वन कर दो, और ऑब्वियसली एन कॉमन जीरो कर देते हैं तो जीरो का लेवल वही है, या फिर तुम ऐसे कर सकते हो लेवल ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो कर सकते हो, और उसके बाद जब डी वन पे यहाँ पे कॉल होगा तो लेवल ऑफ आई इज इक्वल टू वन प्लस लेवल ऑफ जीरो हो जाएगा, तो जो भी इमीडिएट नहीं बना है लाइक वन एंड टू, इसका लेवल वन हो जाएगा. फिर जब इस पे कॉलिंग होगी तो लेवल ऑफ एस वी उठ के आएगा, तो जो कि मैं वन टू कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो ये स्टोर होता जा रहा है, तो वो सब हो जाएगा मैनेज. एंड देन इसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना आंसर जीरो के लिए, ठीक है. इंट आंस फॉर जीरो, ऐसे तुम बना सकते हो कुछ भी, या आंस फॉर जीरो वट एवर, बेसिकली इज इक्वल टू, लेट्स से फॉर लूप चलेगा ऑटो आई इन दिस, या फिर बेसिकली हमें ये देखना है कि किस लेवल पे, हाँ कितने वो हैं. बेसिकली सब ट्री इनटू लेवल कर सकते हैं, बिकॉज इसका लेवल ये होगा, इसका सब ट्री जैसे कि आपका वन है और इसका लेवल आपका जैसे वन है, ठीक है. इसके सब ट्री में चार नोड्स हैं. ओके, लेवल बेसिकली हर नोड का लेवल क्या है, तो जैसे कि वन है, इसका लेवल क्या है, वन टू थ्री, कितना दे रहा होगा, टू. हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और आंस फॉर जीरो जो भी हमने बनाया है ये सिंपल ए कर देता हूँ मैं, ज़्यादा पंगे नहीं. एंड लेवल ऑफ जो भी इसका है, लेवल ऑफ आई जो भी है इनटू आई, आंस प्लस इक्वल टू लेवल ऑफ आई, यही तो है ना, बेसिकली यही है ना, और कुछ तो नहीं है. क्योंकि लेवल ऑफ आई मतलब बेसिकली देखो, जीरो का लेवल जीरो है तो कुछ प्लस नहीं हुआ, ठीक है. वन का लेवल वन है तो प्लस वन हो गया, टू का लेवल वन है तो प्लस वन हो गया, फिर थ्री पे जाएगा, इसका भी लेवल वन है तो प्लस टू हो गया, फिर प्लस टू, ठीक है. आई होप अगर लेवल सही से डिफाइंड है तो ये मेरे को आंसर दे देगा इसका. अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें कॉल करना है किस पे, और बेसिकली, हाँ ठीक है, एक सम बना सकते हैं, सम को रिसाइज करेंगे हम एन से, ठीक है. और सम हम बनाएंगे ऊपर यहाँ पे,
ये सब मेरा फाइनल आंसर वेक्टर है जो मैं रिटर्न करने वाला हूँ लास्ट में, ठीक है। बट उससे पहले मेरे को इसके अंदर सबका सम स्टोर भी तो करना पड़ेगा। जीरो का सम मेरे पास आ गया है, तो सम ऑफ जीरो लिख दूं मैं। जीरो इज इक्वल टू ए, जीरो का आंसर मेरे पास आ चुका है। नाउ मेरे को क्या करना है, डी टू एक दूसरा डीएफएस फंक्शन चलाऊंगा जो भी जीरो से ही चलाऊंगा मैं, और इसके अंदर बाकी सबका सम आ जाएगा। कैसे चलेगा वो डी टू फंक्शन देखते हैं। इसके लिए आई थिंक वॉइड काफ़ी रहेगा मैं, और डी टू इंट एस वी, और इसमें भी हमें एक पेरेंट चाहिए होगा टू कीप ट्रैक की वो ऊपर ना चले जाए, इक्वल टू -1 बेसिकली। एंड फॉर लूप चलेगा ऑटो आई एन जी ऑफ एस वी। एंड अब देखो ये है मेन पार्ट की आंसर जीरो के थ्रू, जीरो का आंसर मेरे पास आ चुका है। हाउ विल आई कैलकुलेट द आंसर फॉर वन बाय यूजिंग द आंसर फॉर जीरो? like we know the answer for 0 is 8. How will I calculate the answer for 1, that is 12? Is there any relation between this 8 and 12? Like not exactly, but there is some kind of a relation. What because like 0, the tree for 0 looks like this, right? The 0 has something on its left, 1, and on its right it have 2, and 2 have the children's like 3 4 5. Let's say 3 4 5. Up now, can you tell me what would be the what is the tree look for one? For tree look for one, you just need to keep this one over here and zero over here. Like what I'm saying, कि वन को ऐसे देखो और वन के लेफ्ट पार्ट में देखो, लेट मी ड्रॉ इट लाइक वन, एंड राइट में कुछ भी नहीं है बिकॉज इस साइड कुछ भी नहीं है ना, बट देर इज जीरो ऑन द अपर साइड। तो अपर को मैंने लेफ्ट में रख दिया, और फिर जीरो के बाद देर इज टू ऑन टू का, और बाकी सारे ट्री सेम है लाइक थ्री फोर एंड फाइव। So this would be the tree for one, you can say, or graph for one. It looks something like this. So zero से कितने डिस्टेंस पे है, बिकॉज इज इट ट्रू और नॉट, यार तुम खुद ही चेक कर लो वेदर दिस ग्राफ इज ट्रू और नॉट। देखने से ऐसा नहीं लग रहा, पर मैंने वन को ऊपर स्ट्रेच कर दिया, पर तुम बोल लाइक हाउ व्हाई वी कैन डू दैट, because the distance will not get hampered. The distance between 1 and 0 is, so this is at level 1. With respect to 1, this is level 1. With respect to 1, this is level 2. With respect to 1, this is level 3. So there are one node at level 1, so answer would be 1 into 1. On there are one node at level 3, so level 2, the answer will be 1 into 1 to 2. There are three nodes at level 3, so at last you have to sum them up, like this is 1, this is 2, this is 9. So 1 plus 2 plus 9 is equal to 12, ठीक है। so that's why what we have to do, कि जिस भी नोड को हम देख रहे हैं उसको हम पहले जीरो तक के मतलब what will we do, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक देन it will be better to understand। of I is equal to sum of SV, इसके पेरेंट का जो भी मतलब आंसर है, दैट इज गोना बी दिस। यू हैव टू डू समथिंग माइनस एंड समथिंग प्लस, ठीक है। सबसे पहले व्हाट विल बी गेट माइनस, ओके, माइनस होगा whatever is present on the right hand side of one, uh, basically what is under the one, because जो under the one था that is under the zero also, क्योंकि पहले zero and let's say under the one there was written something like 8। अगर under the one 8 लिखा होता तो 0 से 8 का डिफरेंस 2 होता, बट व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग फॉर वन, 1 से लेके 8 का डिफरेंस कितना होता, मेरा जस्ट 1 होता, तो एक डिफरेंस कम हो रहा है ना। सो हाउ मेनी नोड्स आर अंडर द वन, दैट विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है। माइनस द नंबर ऑफ नोड्स दैट आर अंडर द वन, वो कहाँ पे स्टोर है, हमारे सब ट्री ऑफ आई के अंदर स्टोर है। बेसिकली द नंबर ऑफ नोड्स विच आर अंडर द आई, दैट विल गेट रिड्यूस्ड बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम जीरो was actually one more than that। now these nodes, let's say if there were two nodes, 10 8 comma 10, so there were two nodes which are having distance 2 from 0, but now they are having only distance 1 from 1। like let's say if a1 is like having something like 8 and 10 and 0 also, these three are actually just at distance 1 from 1। so there was there so therefore like there is a minus 1 into how many nodes were there, so something like, because the difference between the levels is going to be 1, because for 0 it is level 2, for 1 it is level 1, but what makes the difference, how many nodes are getting shifted, so that is basically the subtree of this। Similarly some things are gonna add, like initially it was more closer to 0, so that's why like these 3 4 5 were as level 2 as compared to 0, but for as compared to level 1 it has like distance 3, because like one distance get added, because like as you can see, like 3 and 4 5 how it is getting added to this, there are distance of 3। so that's what you need to do, you have to see like what was like remaining number of nodes, except these three nodes 1 8 and 10, all the remaining number of nodes will be shifted by one level, right, in the positive side। so the level will increase by one, these many nodes, how many nodes, n minus subtree of I। so what you can do, yeah, so you can write it like this only,
or you can write it n minus subtree of 2 into subtree of I plus may n minus 2 into subtree of I. You can also write that like that, or whatever that suits you. But I think the best it is like in this form, because now you can see why it is getting subtracted, because some nodes are coming upwards, you are more closer to this. Why it is getting added something, because some nodes are moving away from it, so that's why the level is increasing, that's why the distance is increasing, that's why the answer is increasing. Yeah. Oh, that's about it. And yeah, it's pretty much simple. You have to actually go to the next node. The next node would be d2 and I. You will call on d2 of I, and starting vertex will be your parent. And that is what it is. You have not, you don't need to do it for parent vector, because parent ke liye, sorry, parent node ke liye, it's already been calculated. So when I is not equal to parent, then only you need to do this thing, like this thing, and this thing, and like this, right? That's about it, I think. Yeah. d2 of 0 पे कॉल करेंगे. Let me try to test this. 16 minutes for one video, but yeah, it's just because like it's a hard question. Okay, g of n को भी हम ऊपर push कर देंगे, because we are creating a global, and n यहाँ से हटा देंगे, and g dot resize कर देंगे. Now let's test this. The main logic of this problem was, this line number 21. N is not declared. Okay, so what can we do? Yeah, so we can create something like Z, and we can say something like Z is equal to N, and over here we can do this Z. Yeah, this line number 22 is the main logic of the problem. This is also like how you can calculate the depth, and how you can calculate the subtree number of node under this. That is not a big deal, but something standard or general thing. This is the main logic or intuition that you have to think of, how the answer for 0 can help us to find the answer of 1 and all other answers. By some nodes are getting shifted towards downward, some nodes are getting shifted towards upward. Pretty good efficiency. Okay guys, let's do GFG problem in other video. Okay guys, bye.